So we are back with yet another session in our fundamental physics series, which is dealing with electricity and circuits. So now at this point in time, um, we are at this point in our timeline that we created in the first lecture of our series. We were taking on the same topic, progressively increasing the difficulty with each class that we progress in, and we studied the basic fundamentals of electricity and circuits in our class 6th, and then we moved on to a little more intricate study of electricity and its effects. What effects does electricity produce in our class 7? And now we are at a stage where we are going to learn a special type of effect that electricity has when it runs through liquids. So this is our point here. So let's do a quick revision as to what we learned in the last lecture, because that was a very information dense lecture, and we had to progress into a more detailed form of study in which we now are starting looking at electricity and its circuits and the circuit diagrams in general, which is a very fundamental way of describing circuits um, on the paper. When we are talking about electricity and its transmission and its distribution, we talk in terms of electric circuit designs. So these were the basic symbols that we would see in an electric circuit if we were to encounter one. This was the symbol of a basic source of electricity, which in our cases would be an electric cell. This was the symbol of a load, which in this diagram is a bulb, which we learned about in the previous lecture, that there are certain kinds of loads. This one is a resistive load, and then there was an inductive load, which produced the effect of magnetism through electricity. And then our safety mechanism, the switch, which is in an on position here, and this is the off position. Then obviously we might need more energy or more electricity to run some of the loads. So there are combinations of cells that are used, cumulatively called as a battery. And these, the wires which take that electricity or the energy from an electric cell or a source to the desired load. Here we see the two basic circuit diagrams which we encountered in our last lecture. An open circuit where the switch is open, which is an off position, and then this circuit in which the switch is in the on position, and it's a closed circuit. Closed, which facilitates that electricity is flowing through it, and the bulb glows here. I can see Yash raised a hand. Yash, do you have a question? Okay, the video. I think we can progress even if the video is not working fine. Who wants to see my face when you have so much interesting electricity in your face right in the screen? I think there is some. Just hold on for one moment, please. That the symbols that we studied in our previous lectures, what do they mean, and how we learned to use them in drawing an electric circuit and understanding the meaning whenever we see or encounter them in our daily lives. So moving on to what else we learned in that lecture.
These were some examples of the effects of electricity and electric current that we learned. First one was the heating effect. The heating effect can be produced, can be seen in an electric circuit when the load is of a certain material, it is made up of a certain material which has a tendency to resist electric current. If it can resist, there will be some form of energy which will be dissipated in as in a form of a byproduct, and that byproduct is very useful for us. वो जो waste release होता है heat के form में, that is used in so many different electrical appliances that we use in our daily lives. One was this electric heater, which was used in earlier households to cook, to do all sorts of daily activities, to boil water, to you know everything and anything that is associated in a kitchen. Then we see a very revolutionary device, which is an electric bulb, which actually made uh, the access of electricity possible even without the natural light of the sun that we had. So these are the loads in these electric devices, which are essentially a circuit. They have very special form of loads. These wires that are made of tungsten and a certain material or certain alloy in this electric heater, which enables them to resist that electric current and then convert that electric energy into heat energy, which can be seen in the form of heat in the first image and then in the form of light and heat in the second image. This was one example, two examples of the effect of the heating effect of electric current. And then we also learned about certain safety mechanisms that are needed in electric circuit, which is dealing with a huge amount of electricity, huge amount of energy. जब काफी ज्यादा अमाउंट्स में इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर रही होती है किसी सर्किट में, then we have to make sure that if something goes wrong, अगर कुछ गलत या कुछ गड़बड़ी होती है सर्किट में, कहीं शॉर्ट सर्किटिंग, कोई लीकेज, किसी भी तरह का एनर्जी का डिसिपेशन हमारे मुताबिक ना हो, तो there should be some safety mechanism which can help us interfere and close that circuit off. तो एक बहुत ही बेसिक सर्किट में हमने स्विच देखा, लेकिन जब चीजें मेगावाट्स, किलोवाट्स, 10,000 वोल्ट्स ऐसे टर्म्स में की जाती है, तब वी नीड सम मोर रिलायबल फॉर्म्स ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म्स, तो जो कि हमारे हाउस होल्ड्स में यूज होता है, हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स में. एक था एक नॉर्मल स्विच या कटआउट. ये कटआउट fuses which have a certain a wire made of a certain material which corrodes and melts down when electricity in huge amounts or in a surge passes through them. The 440 का अगर 440 का अगर current surge आ जाता है हमारे घर में, तो these fuse wires help in breaking the circuit and they safeguard our appliances from getting burned or damaged. So this was that. And then जब टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की, जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को और समझा, जैसे जैसे हमने सर्किट्स बनाने शुरू किए, तब हमने एक नया डिवाइस इजाद किया which works on a similar principle as of a fuse, but it has a more intricate and sophisticated way of be acting as a safety mechanism in the circuit. It has an electronically controlled circuit inside this housing, which constantly monitors the voltage that is running through it, and when it increases or increases to a certain level which is beyond the safe level of voltage flowing through our appliances, then it breaks down. Let's say जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था कि let's say the safe limit is 250 volts. तो ये यहाँ पे सर्किट के जो एंड्स हैं, जब इस पे हमारा कोई भी लोड कनेक्टेड होगा, वो मेजर करता रहेगा कॉन्स्टेंटली एट सर्टेन गिवन इंटरवल्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितने वोल्टेज पे आ रही है. एंड देन इफ इट इंक्रीजेस or reaches a level that is beyond 250, let's say 260, 265 or 270, जो ऐसा लेवल है
जिसमें हमारे appliances can get burned or damaged, then these switches which were in the which were in the on position in a closed circuit, they automatically drop down, वो shut कर देते हैं circuit. And the best part about this, ये reusable है. Fuse wire तो एक बार जल गया तो जल गया. Then you'll have to buy a new fuse wire and then wind it again on between these terminals. लेकिन यहाँ पे MCB जो है reuse होता है, break down नहीं करता है. So these were the safety mechanisms installed in a home electric circuit or any electric circuit in general. Now we encountered a very special form of effect that an electric circuit or electricity can produce, which was magnetism. Electricity converting into magnetism. एक सिंपल सर्किट हमने देखा था जिसमें एक स्पेशल टाइप का लोड, जिसको अभी हमने कहा था इंडक्टिव लोड. इंडक्टिव लोड जब किसी भी हम सर्किट में जोड़ते हैं तो दैट कैन टर्न दैट लोड इनटू अ मैग्नेट, एंड स्पेशली सेइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इफ वी टेक अ स्मॉल आयरन नेल एंड वाइंड, लपेट दें उसके अराउंड एक इंसुलेटेड वायर को, एंड फिर उसे हम एक कंप्लीट सर्किट में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं हम, एक स्विच और एक बैटरी से जोड़ दें. द मोमेंट वी टर्न द स्विच ऑन, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट, एंड जब वो यहाँ इस कॉइल के थ्रू फ्लो करेगी इलेक्ट्रिसिटी, देयर हैपेंस अ सर्टेन फिनोमिनन which is out of the scope of our study here. लेकिन ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वो जादुई तरीके से इस आयरन नेल को कन्वर्ट कर देता है इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग लिटिल बिट्स ऑफ मेटल्स, जैसे कि यहाँ छोटी छोटी पिन्स लगी हुई हैं, ये अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, बहुत छोटे लोड्स को ये अपनी तरफ खींच सकता है. एंड वी ऑल्सो सॉ एन एग्जाम्पल की जो बड़े डंप स्टेशन होते हैं, जो गार्बेज स्टेशन होते हैं, जहां पे सारा कूड़ा जमा होता है पूरे शहर का, they have very big machines and they have a very heavy electromagnet installed in their pulley, जो कि ऐसे सारे मेटल को, स्क्रैप मेटल को एक्सट्रैक्ट करता है उस पूरे डंप ऑफ गार्बेज में से. बहुत हाई करंट्स, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जाती है उसमें, बट देन वी ऑल्सो गेट अ वेरी वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट. उसका एक रियल लाइफ यूज केस था. एंड देन जो हमारी एनसीईआरटी के स्कोप में, सिलेबस में जो एक स्पेशल एप्लीकेशन देखा था हमने ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो था एक सिंपल बेल. जो इलेक्ट्रिक बेल हमने अपने स्कूल्स में देखी है, रिसेस के टाइम जो बजती है या पीरियड्स के खत्म होने के टाइम जो बजती थी. सो वी स्टडीड दैट इट्स अ वेरी सिंपल येट इफेक्टिव यूज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमने देखा कि कितनी सिस्टमैटिकली डिजाइन किया गया है. नाउ वी नो दैट बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन एन इंडक्टिव लोड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. जब यहाँ स्विच ऑन होता, ये करंट यहाँ फ्लो करना शुरू कर देता है, इसके अराउंड करंट जाता है विच टर्न्स इट इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इस हैमर पे जो लगा हुआ ये मेटालिक पार्ट है, ये अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, and that what caused the hammer to hit the gong. ये hammer would hit the gong when the electric current flows through the inductive load. लेकिन अब इसको वापस कैसे भेजा जाए, या तो यहाँ पे एक और लोड लगाया जाए, लेकिन उसकी वजह से ये सर्किट बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है. So what we do is use a special type of switch, which and using this idea, we saved us the hassle of having more components in this electric circuit, and we made a very simple yet effective electric device. So ये पुश बटन क्या करता है, जब तक आप इसे पुश करे रहते हैं तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. जैसे आप अपना हाथ हटाते हैं या फिर जो भी इसे प्रेस कर रहा है, जो मैकेनिज्म इसे प्रेस कर रहा है वो हटता है, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देती है. तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो कर रही है, ये वापस ऐसे जा रहा है, एक और छोटी सी ऐसी चीज लगाई गई यहाँ पे, जिसकी वजह से इस एक्शन को फैसिलिटेशन मिले, इस टू एंड फ्रो मोशन को एक
एक आउटलेट मिले टू सस्टेन इटसेल्फ टिल द इलेक्ट्रिक करंट इज बीइंग पास थ्रू द सर्किट। तो जैसे ये क्लोज आता है इसके, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है ये छूट जाता है, तो उससे क्या होगा कि वापस ये सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ सर्किट यहाँ पे इस जगह पे ब्रेक हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर दी इस इंडक्टिव लोड से, एंड देन वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह गया, वो सिंपल एक आयरन पीस बन गया। तो ये जो पार्ट था हमारा मेटालिक पार्ट, वो वापस अपनी जगह पे आ गया। एंड देन फिर क्या होता है, फिर ये चीज यहाँ पे फिर से टच कर जाती है, ये हैमर का जो एंड है वो वापस टच कर जाता है उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, विच इज अ वेरिएबल स्विच। तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू कर देती है स्विच से, एंड देन ये इंडक्टिव लोड फिर से कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में, एंड देन दिस प्रोसेस गोज ऑन जब तक कि हमने पुश बटन प्रेस किया हुआ। एंड व्हेन वी टेक आवर हैंड्स ऑफ ऑफ दैट, इट इज अ डेड सर्किट। Then that was the revision part. I hope you guys still remember the parts that we studied in our previous lectures, and I try to get some revision done in the earlier phase of our lecture so that कुछ रहे आपके दिमाग में, context हमेशा बना रहे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज हमेशा आपके दिमाग में रहे। So the topic that we are going to cover today would be the effects of electric current when it is being conducted through liquids. ऐसे क्या इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा जब वो लिक्विड्स के थ्रू पास हो। अभी तक हमने देखा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सर्टेन सॉलिड स्ट्रक्चर से पास करा रहे हैं, जैसे ये कंडक्टिंग वायर्स थे, वो रेजिस्टिव लोड्स थे, वो मेटालिक प्लेट थी मोटी सी विच वाज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लिक्विड्स पे आएंगे। लिक्विड्स का भी रोल होता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने अपनी एकदम फर्स्ट क्लास में बताया था कि वाटर, सी वाटर कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल वाटर क्यों नहीं, नॉर्मल वाटर भी करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर नहीं है जिसमें कुछ कंटेमिनेशन ना हो। बट सिर्फ H2O अगर होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसमें एक टर्म आता है फ्री आयंस, जो कि शायद आप अपने केमिस्ट्री क्लासेस में सीखेंगे। सिंपल H2O जो है क्लिनिक्स में बनाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, दैट विल बी कंप्लीटली न्यूट्रल। लेकिन सी वाटर में ऐसा क्या खास होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं खारा पानी। तो खारा बनाता क्या है उसे, सॉल्ट, एंड सॉल्ट इज मेड अप ऑफ आयंस, सर्टेन आयंस। तो वही सॉल्ट जो होते हैं इसके अंदर टेंडेंसी बना देते हैं विच हेल्प्स इट इनटू कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे लिखा है जैसे डेफिनेशन में, व्हेन द लिक्विड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows, which is very, very simple to understand. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and hence the bulb does not glow. तो सिंपल फैक्ट्स को स्टेट करने वाली बात हो गई। जैसे हमने ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट सीखा था, सर्किट खुला है या बंद है। अब यहाँ पे हम स्विच को ना यूज करके, स्विच को हटा के, वी आर ट्राइंग टू टेस्ट सम लिक्विड्स वेदर दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, एंड वही वो स्विच का काम कर रही है यहाँ पे। जैसे लेमन जूस, लेमन जूस वी नो कि इट इज एसिडिक, ये भी एसिड एंड बेसिस का भी कॉन्सेप्ट आप अपनी केमिस्ट्री क्लास में सीखेंगे। इफ समवन इज पेइंग अटेंशन इन द केमिस्ट्री क्लासेस तो वो फिर लिंक कर पा रहे होंगे कि सारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स आर क्वाइट इंटर रिलेटेड। तो लेमन जूस is juice of that lemon suspended in some form of liquid, जैसे कि हमारे केस में वाटर होगा, या फिर यहाँ पे लिखा है जैसे कि विनेगर भी। So these are acids and acids are known to have certain positive ions roaming around free in their suspension state. तो यहाँ पे कुछ ऐसे ions हैं which have a certain charge। अब यही एक इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी को समझाने का, कि असल में ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है यहाँ इस बैटरी से यहाँ पे, ऐसी क्या चीज फ्लो हो रही है जो कि यहाँ और इस चीजों से पास करते हुए जाती है,
इसमें पहुंचती है और फिर यहाँ पे एक सर्टेन इफेक्ट प्रोड्यूस कराती है. So, as the first definition that we learned in our first class was that some charged particles, when they move through a system of a circuit, and that energy that's being transmitted through those charged particles to that load, it gives out certain effects. So electricity is nothing but a flow of charged particles, and वही charged particles जो हैं जिन्हें शौर सर ने अपनी क्लास में ज्यादा डिटेल में बताया भी था यूनिवर्स की जब स्टडी कर रहे थे. इलेक्ट्रॉन्स are those negatively charged particles which are present in any conducting medium. यहाँ इन कॉपर वायर्स में भी होते हैं, बैटरीज में भी हैं, और इस लोड में जब वो ट्रैवल करते हैं then that negatively charged particles, the flow of that negatively charged particles is called electricity. तो लेमन जूस में भी वो चीज है which means कि ये जो लिक्विड सब्सटेंस यहाँ रखा है वो भी is acting like these connecting copper wires. If we move on to the next slide, अब इसका फायदा क्या होगा? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि लिक्विड्स क्यों कंडक्ट कर सकती है? भाई किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि ऐसे बहुत सारे तार जा रहे हैं फिर एकदम से जो है बहुत सारा ड्रम रखा हुआ है किसी लिक्विड का, उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल दी है कि भाई ये तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकता है, इसको भी डाल देते हैं सर्किट में. नहीं, liquids are a very versatile substance and they have certain effects. They have certain effects when current is passed to them, and वो हम अपनी कुछ जरूरतों के लिए यूज करते हैं. जैसे the passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reactions. Chemical reactions ही वो desired effect है, वो special effect जिसकी बात हम कर रहे हैं, which are useful to us. As a result, bubble of gases may be formed on these electrodes. Deposits of metal may be seen on electrodes. Changes of color of solution may occur. The reaction would depend on what the solution and electrodes are used. These are some of the chemical effects of electric current. तो यहाँ पे दो तीन चीजें कही गई हैं कि when the passage of electric current goes through a conducting solution, it causes some chemical reactions. And what reactions happen, that is out of the scope of our study. Maybe in the chemistry classes you will get to learn some of the reactions, but हम उनके end results, जो उनके effects हैं जो हमारे काम आएंगे, उनके बारे में जरूर सीखेंगे. जैसे some bubbles of gas may be formed on these electrodes. अब ये जो electrodes हैं, electrodes या कि ये metal connectors, यहाँ special metal connectors हैं, these are a little different from the connecting wires, the copper wires that are there. These are called electrodes when they are submerged in some form of liquid. So these, for example, it is said that it is made out of carbon. Carbon is an element which we'll be studying in chemistry, and it's being suspended in water. Then certain reactions would happen over here. Reactions के effects क्या देख रहे हैं हम? Bubbles of gas will be formed the electrodes. कभी हमें जैसे electroplating is a very good example of using the chemical effects of passing an electric current through a circuit. उसमें क्या होता है, किसी भी मेटल को अगर हमें दूसरे मेटल पे चढ़ाना है, जैसे हम प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग करवाते हैं चीजों की, सिल्वर प्लेटिंग या फिर किसी भी फॉर्म की प्लेटिंग, तो वो इस ही इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गोइंग थ्रू अ लिक्विड को यूज करके होता है. जैसे यहाँ पे अगर ये कार्बन के ना होके किसी डिफरेंट एलिमेंट के होते, एंड मान लीजिए किसी एलिमेंट की डोमिनेंस ओवर द अदर एलिमेंट ज्यादा है, और जब हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो डोमिनेंट वाला मेटल है उसके ऊपर उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके सरफेस से वो निकल के जाके दूसरे पे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वो भी अपने में मिला लेगा, उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा. That's how electroplating is done, which will be the next topic we are going to study, but that was a very small introduction to it. Deposits of metal may be seen on electrodes, जो कि अभी हमने बात की electroplating की. Changes of color of solutions may occur. अब हाँ, ये बहुत ही एक क्या कह सकते हैं,
special characteristic है of elements on this planet or all in this universe, that they may change color when going through chemical reactions. तो यहाँ पे हो ही ये रहा है, when electricity is being passed through that liquid, कुछ certain chemical reactions हो रहे हैं उस liquid में जो facilitate कर रहे हैं उसका color change कर देने में. The reaction would depend on what solution electrodes are used. These are some of the chemical effects of electric current. Basic सी चीजें पढ़नी थी इस क्लास में. क्लास 8th की एनसीईआरटी के स्कोप में ज्यादा चीजें है भी नहीं. उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप अपने घर में अगर ये apparatus बना सकते हैं तो देन यू कैन एक्चुअली सी दीज थिंग्स इन एक्शन. जो 3 स्लाइड्स हमने देखी कि whether lemon juice or vinegar conducts electricity or not, and this kind of apparatus might be a little difficult to find, but इसके आप कुछ videos and कुछ experiments देख सकते हैं YouTube पे, which shows you the electroplating in action, which takes us to the exact slide where we are going to discuss electroplating. The process of deposition of a layer of any desired metal over the other material. और वो मैंने पहले थोड़ा बता दिया कि ये एक्चुअली होता कैसे है. The dominant metal always sticks to the metal which is not as dominant as that. The process of depositing a layer of any desired metal on the other, like gold plating, silver plating, copper, brass, anything, over the other metal, and electricity, by the means of electricity, is called electroplating. So electricity is giving us a special effect when it is passing through a liquid, and hence a special form of process is being developed called electroplating, where the deposition of a layer of a certain material over the other takes place. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. जैसे कि एक रस्टिंग आप लोग जानते होंगे. आयरन जो है जब वो खुले में रहता है, हवा के कांटेक्ट में रहता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, तो उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है. इट स्टार्ट्स टू रस्ट. So in order to remove that rusting, it is also subjected to a very specific kind of electroplating called galvanization, and उस इफेक्ट की वजह से उसका रस्ट हम वापस रिवर्स कर सकते हैं. उसको रगड़ने या किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसे नहीं किया जा सकेगा. Only liquids have that power to take that rusting out of it. So वही पिछले डायग्राम में जो चीजें हमने देखी थी उसका एक वही सेम सर्किट यहाँ पे है, which tells us कि how to demonstrate a simple electroplating process. So these are copper plates. The electrodes that we see here are made of copper metal, and then the solution in which these plates are suspended is made out of copper sulfate. What we want to do is, if we want the plating of these electrodes to be done, तब जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर देंगे, it will go through this liquid and make certain reactions happen, जिसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपकी केमिस्ट्री क्लास में आपको सिखाया जाएगा. So this will but give you a reference कि what to look for when you are studying these reactions between metals and acids and bases. आपको उनका real life application भी समझ में आता रहेगा. When electricity passes through it, it suspends this copper sulfate solution into ions, and the ions which are favorable to go stick upon these electrode plates will happen until the electricity is flowing through them. And when that stops, when certain desired time has elapsed, and that ions or that material from the solution of this electroplating apparatus has been deposited on that electrode, then the electricity is stopped to flow, and then hence our electroplating is complete. Now we have certain layer of metal deposited on these electrode plates, which might give us a change of color, or which might show us a reaction of effervescence. जो bubbling की बात हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है मेटल्स और लिक्विड्स के बीच में से,
and that reaction of effervescence might take place, and hence we get our desired metal. That was a very brief chapter in the NCERT class 8 book. I went through it. There are only activities present in that, and it will be beneficial for you guys if you go through YouTube or any media channel of your choice, where you can find some good examples of electroplating or the liquid effects, the effects of electricity in liquids. So these were the 4 different things that we learned in today's chapter. Some liquids are good conductors of electricity and some are poor conductors of electricity. And it is upon us whether we can interchange those. We can convert poor conductors of electricity into good conductors by adding certain minerals or metals to it, so that they can also have free flow of electrons. And good conductors of electricity are provided by nature. Most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases and salts. जहाँ की हमने बात की थी कि केमिस्ट्री की आपकी प्रोग्रेसिव क्लासेस में, कंसेक्यूटिव क्लासेस में आप लोग इन टर्म्स पे आएंगे, इन चीजों को बहुत अच्छे से सीखेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस होते क्या हैं, एंड व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स बेसिकली उनकी रिएक्शन एनर्जी को स्टोर करके रख लेते हैं. एंड द कलर्स वी सी आर ऑफ द सॉल्ट्स. जैसे कॉपर सल्फेट हमारे प्रीवियस इसमें देखा था हमने, दिस हैज अ सर्टेन कलर टू इट. And the passage of an electric current through a conducting liquid causes chemical reactions. The passage of an electric current through conducting liquid causes chemical reactions. This was the gist of this whole class 8 syllabus. That when electric current passes through a conducting liquid, it does something. It facilitates chemical reactions. And the effects that we saw were bubbling of a gas, maybe, which is called effervescence. Then deposition of a metal on electrodes, deposition of a certain material on another material, which we studied is called electroplating. And then we may also see a change of color. These were some of the basic effects that we would see when electric current passes through and conducting liquid. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. NCERT में बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स आपको सिखाए जाते हैं, एंड बहुत ही बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में जब मैग्नेटिज्म इफेक्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें भी हमें बहुत मतलब इंट्रिकेट चीजें दिखाई जा सकती थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो बहुत ही बेसिक लेवल का था, जिसका हमने देखा इलेक्ट्रिक बेल में एक यूसेज. बट ऐसे बहुत क्या कहते हैं इंट्रिकेट जगह होती हैं इलेक्ट्रॉन कंट्रोल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स में, जहां इस मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, बट वो थोड़ा हमारे स्कोप के बाहर है. लेकिन जितना हमें अपने सिलेबस के लिए, CSAT के लिए या फिर हमारे GS में चाहिए होगा, उतना आई गेस सफिशिएंट होगा इफ वील जस्ट स्विफ्ट थ्रू NCERT सिलेबस. और कभी कभी इफ योर क्यूरियोसिटी अलाउज, तो आपको कुछ ऐसे वीडियोस देख लेने चाहिए जो आपने जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा है. इफ यू विल गो थ्रू यूट्यूब and search for some backyard science examples of electroplating या ऐसी छोटी चीजें, तो शायद आपके अंदर तो इंटरेस्ट भी आ जाए. You may start hobby reading science as well. But this was the scope of today's lecture, and this we come to an end for today's class 8th NCERT fundamental physics. And I would like to say कि अब हमारे 2 lectures बचे हैं, class 9th and class 10th. Class 9th does not have electricity directly in it, but it introduces us to magnetism. And the class 10th would be having our a little more advanced
टॉपिक ओवर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, जिसमें हम शायद थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स और उनके फ्लो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ये सब टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखें। और शायद कुछ केमिकल रिएक्शंस भी मैं लिखूंगा, जो कि अगर आपने केमिस्ट्री क्लास करी और रिवाइज की होगी तो शायद आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। 10th क्लास जब हम सिलेबस खत्म करेंगे तो देन वील बी डन विद इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इन आवर फंडामेंटल सीरीज। एंड बस हमारा एक टॉपिक है मैग्नेटिज्म का, क्योंकि मैग्नेटिज्म इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विदाउट फिजिक्स, जो कि यश ले रहा है। उसमें जब आप किसी भी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो एक चीज आती है वेक्टर्स। तो मैग्नेटिज्म को समझने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी उसको बना कैसे रही है मैग्नेट में, वो कॉइल्ड अप वायर जो है एक आयरन रॉड के अराउंड या एक नेल के अराउंड, वो ऐसा कर क्या रहा है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर रहा है, वो समझने के लिए वील नीड टू लर्न अबाउट वेक्टर्स। So if we get to do that, Yash and I will both be taking that class in unison, अगर ऐसा हो सकेगा। बट रेस्ट एश्योर्ड हमने काफी इजी तरीके से इसको आप तक लाने की कोशिश की है। इफ इट इज यू नो getting inside your heads, then that's very good. I hope I can you know initiate some form of scientific thinking in you guys. And अगर आप वो करना सीख जाएंगे तो यू विल गेट दैट पावर ऑफ रीजनिंग इनसाइड ऑफ यू। आप अपनी बातों को या फैक्ट्स के साथ बैक करके समझाना सीख जाएंगे, कन्विक्शन आ जाएगा आपकी बातों में, एंड यू साउंड मोर skilled in what you're talking about. So that will be all. Thank you for your patience and have a good day. Okay, I see some question. Somebody said if pure water नहीं करता क्या? तो प्योर वाटर क्या था, मैं जैसे मैंने बताया कि जो H2O होता है प्योर वाटर जो हम लैब्स में बनाते हैं, दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बहुत डैम्प कर देगा आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को। Every natural source of water that we have has some form of impurities dissolved in it. वो impurities यही वो salts हैं जो हमने देखा है, जैसे ज्योग्राफी क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ की जो सॉइल है या यहाँ जो नदियां हैं, दैट ब्रिंग्स अलूवियल विद इट। अलूवियल इज फॉर्म ऑफ सॉल्ट जो कि पानी के साथ आ रहा होता है, पहाड़ों से कट के आ रहा होता है। दैट enables any liquid to have that potential to flow electricity to it, to conduct electricity. अगर प्योर वाटर है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कुछ सस्पेंडेड लिक्विड नहीं है, वो H2O बॉन्डेड हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डेड ही आपको वो वाटर दिख रहा है। अगर उसमें उस H2O के अलावा और कुछ नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। यस, distilled and double distilled water can't conduct. And when you dissolve some salt in it, if you add some acid or base into it, तब वो एक कंडक्टिंग लिक्विड बन जाता है। जैसे कि हमने लेमन जूस के बारे में पढ़ा, विनेगर के बारे में पढ़ा, दे आर एसिड्स, एसिडिक लिक्विड्स, तो hence they conduct electricity and pure H2O might not. I don't see any other questions in the chat. काफी बेसिक क्लास थी है, इसमें ज्यादा कुछ इंट्रिकेट था नहीं जिसपे क्वेश्चंस बने। I hope I was able to reach out to all of you and it's good. क्वेश्चंस आने चाहिए कभी कभी, साइंस में तो खास तौर पे क्वेश्चंस आने चाहिए। Okay then, thank you. Will you please repeat electrode? Just give me a moment. इलेक्ट्रोड्स का काम हमारे यूज केस में ये था कि जब हम एक लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराना देखना चाह रहे थे, तब तो हमने सिंपली ये
सर्किट यूज कर लिया था जिसमें डायरेक्टली वो डिप्ड है, इसमें कुछ हमें करना नहीं है, वी आर जस्ट टेस्टिंग दैट लिक्विड कि वो क्या करे। अब वो कंडक्टिंग वायर्स जो होंगे, अगर उस पे कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कुछ मटेरियल्स का ट्रांसफर हो रहा है तो वो हमारे लिए यूजलेस होगा, क्योंकि देन वी वोंट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट फ्रॉम देम, या फिर हम डिजायर्ड इफेक्ट नहीं रीच कर पाएंगे। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली यही कंडक्टिंग वायर्स के एंड्स होते हैं जब हम किसी एक केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ यूज अपने लिए करना चाहें। जैसे कि इस एग्जांपल में ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल था, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स जो थे ये कार्बन रॉड की थी। जैसे बैटरी जो होती है हमारे अंदर, वो भी सर्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही काम कर रही होती है, बट उसकी भी एक जो जो नॉर्मल सेल्स होती है हमारी, वो उसकी बीच की रॉड कार्बन की होती है, एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन, एंड उसके अराउंड एक लिक्विड सस्पेंडेड होता है। तो जब हम कनेक्ट करते हैं वायर्स उसके थ्रू, तब वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू हो जाते हैं सोल्यूशन से थ्रू दैट रॉड, एंड वो पूरे सर्किट को कंप्लीट करती है। एंड व्हाई अ बैटरी इवेंचुअली डाइज आउट इज आल्सो द रीजन फॉर दिस। वो उस रॉड पे जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई होती है, तब वो अपना वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, एंड हेंस उसकी वोल्टेज बहुत गिर जाती है। यही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स बस एक ऐसी सर्कमस्टेंस में जब हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड का यूज करना चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू एक्सट्रैक्ट दैट इफेक्ट that electricity is producing through a liquid, then we use electrodes which are usually dropped in liquids in some form. जैसे एक थोड़ा ज्यादा इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट है, ट्यूब रॉड्स की हम बात करते हैं, तो उसमें भी जो एंड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोड्स ही कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग पास थ्रू देम, लेकिन जो मटेरियल बीच का होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब रॉड्स के अंदर, वो लिक्विड नहीं होता, वो एक बहुत ही अलग स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको प्लाज्मा कहते हैं, वो होता है। उसके थ्रू भी किसी भी सस्पेंशन के बीच में इफ वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, then the terminals of that apparatus would be called electrodes. Simple. I hope that would be clear now. कुछ खास था नहीं है, ये हमारे स्कोप ऑफ स्टडी के बाहर भी है, और लेकिन अच्छा है, whoever asked the question, that was good. Electrodes can be used in solids, liquid and gases for the conduction of electricity. जनरल टर्मिनोलॉजी में उससे हम टर्मिनल्स कह देते हैं, where electricity is passing through one point to the other, टर्मिनल्स कह देते हैं। बट हाँ, लिक्विड्स इन जनरल, फ्लूइड्स कह लीजिए, फ्लूइड्स में लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा सब आ जाता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्लूइड्स, उसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और अगर इसे और ज्यादा आप क्या कहते हैं, पिन डाउन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक वर्ड हमने सुना था, तो these are the carriers of that electrons, that why electrodes. और ये केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ेंगे भी, I don't remember whether it is in the scope up until our 10th, but एक चीज आएगी, एनोड एंड कैथोड। इलेक्ट्रोड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनोड्स एंड कैथोड्स। ये भी एक टर्म है, अगर किसी को इंट्रीग कर रहा होगा तो वो इसको लुकअप कर सकते हैं 10th की एनसीईआरटी में या फिर ऑन द इंटरनेट। So yeah, Shruti, that was the explanation for your question. And if yeah, good. If there aren't any more questions, then I think we should sum it up for today. And I hope you all enjoyed today's lecture as well. And meet you next Thursday. Bye bye.